Srimani Madam. A very good afternoon to one and all. I, Srimani Swapna, Assistant Professor of English, welcomes you all to the national webinar on Study of Literature and Arts is the Central for Moral Education, organized by the IQAC cell of Bhadruka College of Commerce and Arts. At the first instance, I would like to extend my warm greetings to Dr. Pankaj Sharma, the speaker for today's webinar, a senior faculty of PG and UG Department of English at Government Degree College, Udhampur, Jammu Kashmir, Union Territory. I would also like to extend my greetings to all the participants who are viewing this webinar and my greetings to Dr. Rajesh Agarwal, the Vice Principal and the convener of the webinar. At this moment, I take it as my privilege to share a few words with you all. This webinar is organized by IQAC cell of Bhadruka College. The Internal Quality Assurance Cell is a vital part of the college and it works towards the realization of goals of quality enhancement of the institution. The prime task of IQAC is to develop a system for conscious and consistent improvement in the overall performance of the college. Now, if you see to the topic of the webinar, the domains of literature and art have overlapped in a number of ways. As literature and modern art have become increasingly secular over the past several centuries, and because of the increasing specialization and professionalization, the literature and art have become autonomous disciplines in the academics. Virtually all great literature and art address and deepen our understanding of those existential questions about the meaning of life that are inescapable for an reflective person. What is important is not simply the aesthetic dimensions of art and literature. It is the moral, political, and religious insight into the human condition, as education should make individuals to be conscious of the dignity of the human person by way of reconciling the self-interest with social well-being. With these few words, I end here. Now, I would like to request Dr. Rajesh Agarwal sir, the Vice Principal and convener of the webinar, to address the participants. Over to Rajesh Agarwal sir. Good afternoon, one and all. I take this privilege to welcome you all for this seminar. The speaker of the program, Dr. Pankaj Sharma ji, is a very good friend of mine. We have met in the NSS National Integration Camp at New Delhi in 2007 and 8. From then onwards, we are continuing our friendship in the academic matters as well as sharing our thoughts on different issues. I know Dr. Pankaj Sharma ji is a master of many subjects. Basically, he is a teacher in English, but his interest of areas are related to history, culture, literature, and many more. So I welcome you, sir, to this program and wholeheartedly from the Bhadruka College management as well as our staff. I would like to say a few words about our college, which started in 1950, 2nd August. When Raja Bankatlal ji Bhadruka placed the first brick of our institution in 1950, it was just the first step to a dream that was to mark 70 years of legacy and more. From an educational institution that began as a degree college, we have expanded into various institutions, now taking 4,000 students every year. Bhadruka College of Commerce and Arts has to its name the honor of being the first commerce college to be affiliated to the Osmania University.
Badruka family is built on purely meritorious students, highly educated staff with a combined experience of over a century, and the relentless non-teaching staff who are silently making our lives easier. Another significant part of the Badruka family is its alumni settled in different parts of the world at significant positions. The alumni of our institution carry the Badruka torch into the world. Honestly, it wouldn't at all be exaggeration to say that Badruka has played a significant role in driving change. I would like to mention some of the alumni who are at a very high position, and this alumni includes our politicians, our academicians, lawyers, advocates, chartered accountants, professionals who have occupied very high positions throughout the globe. The reason of the institution's success par excellence is its approach to education. Here, we believe in overall development of every student, having equal opportunities to choose to develop their extracurricular skills. The students of Badruka have been around the nation and have won prizes. We have different clubs to encourage the skills, inbuilt skills of the students and to hone up their skills. The clubs include the management club, literary club, through which we are conducting this activity, this webinar. I thank Srimani Madam for taking up this challenge and coming up with a very good topic and conducting this webinar. She is the coordinator for this webinar and also the head of the literary as well as various clubs in the college. To the credit of Badruka College, we have NCC students, NCC cadets who have joined the army in various positions, our NSS volunteers who have participated in various social service activities throughout the country, throughout the city, in various programs and various activities. I would like to mention here recently in 2020 January, our student Mr. Pradeep Nayak has participated in the NSS Republic Day at New Delhi from the NSS wing. I also congratulate I also congratulate the NSS wing for taking initiative and sending the volunteers to participate at such a high level. I would like to thank all the faculty members, coordinators for taking keen interest in conducting this webinar and organizing this webinar. And at the outset, I will not forget to thank our management, the present secretary, Shri Mukunlalji Badruka, the Director General, Professor Abhirama Krishna, the management committee members, and the whole of management and authorities who are always at our side to support us in conducting various activities, including such webinars. I promise you that from Badruka College, many more other webinars are upcoming, and I hope all the participants who are participating throughout the country uh, will participate in the upcoming webinars also. We take this opportunity to thank all the participants who have spared their time in attending this webinar. I would like to say here that more than 2,000 participants have registered for this webinar and they will be watching this program throughout the country. I thank one and all for participating and thank you all for this opportunity. Thanks one and all.
I'm glad and I feel honored to introduce our guest speaker, Dr. Pankaj Sharma, sir. Dr. Pankaj Sharma is a senior faculty of PG and UG Department of English at Government Degree College, Udhampur, Jammu Kashmir Union Territory. Sir has done his MA English, MPhil, PhD, and has a diploma in yoga and physiology. He is a creative writer who writes in English, Hindi, Dogri languages. He is a poet, writer, research associate, motivational speaker, and a cultural activist. He is also a regular yoga practitioner. Sir is the coordinator of EFSLE India, Jammu region. He is the Peace Ambassador, International Peace Federation. He holds the membership of various organizations like he is the founder member executive at Meri Mitra Mandali Ek Sahitya Karanti, a multilingual literary organization, Jammu. Sir is also a member of Jagriti Vriddha Ashram, Bhal Ashram, Udhampur, Jammu. He is a registered translator with National Translation Mission. He is also a member of Media Cell, Publication Cell, Heritage Club, and Internal Quality Assurance Cell of the college. He has been a NSS volunteer and a program officer for over a decade. Sir has organized a number of workshops, rallies, seminars, symposiums, cultural programs for the conservation of original folk literature and is also an environmental activist. He has attended and participated in a number of local, state, national, and international seminars and conferences. He has attended various workshops and training programs on communal harmony and gender studies. He has organized many camps and workshops on social work, personality development, and stress management. We are very glad to have you here with us, sir. May I now request our guest speaker, Dr. Pankaj Sharma, sir, to kindly proceed with his presentation. Over to Pankaj Sharma, sir. Starting, let me say a few words for the organization. I am deeply humbled and highly grateful to the principal, to the management, to all the staff and the entire team of the Bhadruka College of Commerce and Arts that has a matchless history of near to a century now. It started in 1950. I'm highly thankful to the organizers, especially convener and his teammates, particularly Ms. Srimani Swapna, faculty and coordinator of the webinar, and heartfully to Hayat Sir Bhasha for all the logistic and technical support that he has provided. And I'm also very regardful to Mr. K. Naveen Kumar, who is coordinator of the IQAC of the Bhadruka College. And I congratulate all of you for organizing such a webinar, and I hope that will be very successful in bringing all the intellectuals of the nation and on the whole world all together and has brought the one umbrella. I am really humbled that you thought of me, and Agrawal sir rightly said, rightly from the day we met in a national integration camp that was organized in Jamia Millia Islamia in the year 2006-7. From that very day, a special relation has been established in between us, and we have talked on various issues with relation to literature, culture, and all that. And at the same time, I'm also very thankful to all the participants that I came to know just at this point of time, that some 2,000 participants are with us at this time and are from the different institutes who have gathered all together here. I know this thing that no knowledge is absolute. Whatever I know, I speak. And we are merely, removing the ignorances that prevail in our mind. The real divine perfection is within us, as Swami Vivekananda
has rightly said, and one Sufi saint has also said कि माना आदम खुदा नहीं, कि हमने माना आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं. That light is within us only. So with this, we start with the presentation that includes some slides that I'll be putting onto the screen now, and in the light of that only we will be discussing. I start with the verse from the Rigveda, Anubhadra Kritvayanto Vishwata. May auspicious noble thoughts come to us from all over the world. And a prayer for peace. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashit Dukh Bhagave. Om Shanti Shanti Shanti. This is what we need to establish in our life. We need to have noble thoughts, auspicious thoughts, and unrestricted. Because when we restrict our thoughts, there come the emotion and the passion, and that creates the disturbance in our mind, and mind rules over our body then. So the topic that the organizers have selected is very near to my heart, and that is study of literature and arts is central for moral education. It includes certain points like morality, moral values, literature, arts, and with that culture also. Now, first of all, in a very simple layman's term, we understand what are the moral values and morality. And we know that it's a belief or understanding between right and wrong behavior. When we are at home with our children, what sort of behavior we are exhibiting, what sort of behavior the parents are exhibiting in front of them, what sort of belief system the family is having, what sort of belief system a teacher is having towards the student, and in the same manner, vice versa. From where all this starts. Today we are into a kind of mess, a mashup that we have created in our life. And what sort of behavior is being exhibited? It starts from the society, it starts from the family, and then on the whole, as a nation, what are we exhibiting? People are looking at us, and that way it becomes very important to understand all those principles and values which are related to the behavior of the people. And what are those? What is morality? Or what are the moral values? These are the common codes, or this is the sort of behavior which is accepted as a common code by the society or a group of people. And the first unit is the family itself. And then when we go out of the family, then the society. What sort of common code of conduct has been established there? So it's indeed important, and we would say that all those perceptions, all those sort of thoughts which exhibit a kind of behavior, it's all about right and wrong with relation to the virtues and the morals and the ethics, what I consider as right or wrong, and how will it reciprocate. That is what we have to think about. So moral education, it's so that values are missing in our today's education. Why? Because there is more sense of competition, there's pressure from the side of the family also. And in that mad race, what is happening? The values are missing in education. And
That's why there is need, as the college also felt, the organizers also felt, and we as parents feel it, we as teachers feel it, and those who are grown up, those who are in colleges or in the universities, those who who have got a sense of value. And mind it starts rightly from a very tender age. Look, today the children have a lot of violence in the mind. From where is it coming? It is coming from the television. It is coming from the kind of behavior which is being exhibited by the parents, by the relatives, by the kith and kins. So there is need. As a teacher, I feel that there is a dire need of driving the student, driving our near and tier one children towards a value based, morality based moral education, and that inculcation has to be in the society. That education needs to be given to the students, given to the children at homes. Only then they will be more constructive, only then they'll be more productive and contributive to the society, and then on to the whole of the world. So, what are those things what we need to focus on? And it's missing, it's really missing. For example, I go to a shop of a person who finds the cycles. So if I say, okay, I've got a new tube in the tire of the motorcycle or bicycle, and ask him, okay, I'm going to some distance, and from there till the time you see, I think it might be punctured. And when I come back, I know that it's not a puncture tube, it's a brand new tube that I have bought in 450 or 500 rupees. No, the honesty lies onto that very cycle wala, that very rickshaw wala vendor who finds that puncture. Whether he says, okay, Babuji, it is all right, ये बिल्कुल ठीक है, or does he go for, I have put 2 or 3 punctures and this much amount you have to pay? Okay, without putting any puncture to the, or healing any puncture of the tube. So in the same manner, it comes to the society also, it comes to the individual also, whether all those virtues like honesty, like fair character, like taking responsibility for whether I am having respect for others or not, whether I respect a beggar in the street, whether I respect a conductor in the bus. From where all this will come? This will come from having the sense of right or wrong. It's very easy to say, but very difficult to do. The kind of behavior that we exhibit. Now, why it has happened? It has happened because there is distortion. The kind of age that we are living in, the modern to the postmodern to the age of LPG, localization, privatization, and globalization. There are so many socio-cultural changes that have happened, that there is transition at such a high pace with a bullet train moving speed, and it has led to a great distortion of the moral values in the society. Why? Because the society is more capital driven. Money, that is the prime need, capital. And then we used to have very strong family bondings. I'm not saying that on the whole it is lost in India, but yes, with the coming of metro culture, urbanization, the nuclearization of the families is happening. And then mere consumerism, use and throw kind of attitude. And then
there is a mad race, a utilitarian race for competition. I have to get more marks. I have to do anything in whatsoever manner, whether it is right or wrong, ends justifies all means. So that is happening, and with that, a kind of cutthroat politics. How can I gain more? Whatever the sort of in between the parties we find that I have to win election, and for that, to how much extent and to whatsoever extent I can go, I will go. It's by the power comes in any manner, whether it is muscular, whether it is by money, or by any essence, by any set of things that I can do. And it has happened to a great extent with the a revolution in the information communication and technology. There is less control of the parents, there is less control of the teacher. I'm not saying that we have to control somebody's mind, but we have to inculcate them with true values, with true moral values, that to whatsoever age we go, to the modern, to the ultra modern age we go. Maybe we are living in the age of post truth, but still, if we unlayer that truth, it will definitely be the same, क्योंकि सत्य शाश्वत है, सत्य कभी नहीं बदलने वाला. The only thing is that we miss that unlayering, we miss that deep fabrication of the information to go to the truth. For example, if some message comes to us on WhatsApp or any social media, and if I forward that without knowing from where it has come, what is in that, like it's related to some violence has happened, not checking whether it will be good or bad on my part to forward it up to the other person or to the group. And it is this sense, this law, this lack of that sense, that rationality, and then the distinction that I have to make in between what is right or wrong. I go on creating more rumors, and maybe that leads to the spread of more violence in the society. So that's why there is need of having that essence of literature and arts. Maharishi Bhartrihari in Niti Shatak has rightly said, if we do not have the understanding of, let's first of all go to that very verse, Sahitya Sangeet Kala Vihina Sakshat Pashu Kuch Vishan Hina. This means साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून और सींग रहित पशु के समान है. And that's why when we do not have any kind of knowledge, I'm not saying that will come from the books only. Knowledge can be delivered by music also. देखा तो मेरा साया भी मुझसे जुदा मिला, और हर अजनबी शख्स से मेरा सिलसिला मिला. और वो सिलसिला क्या है? मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं. And why should I kill someone? Why should I derail someone for my benefit? तब वो एक utilitarian essence बन जाता है. In the same manner, arts, when there is an aesthetic appeal in the mind, when the mind understands the aesthetics, उस ब्यूटी को जानता है, सत्यम शिवम सुंदरम, और as we say that truth is beauty and beauty is truth, that all you know and you need to know. And a thing of beauty is joy forever. वो जो एक आनंद और एक परमानंद या एक सुख की अनुभूति दे, आप यकीन मानिए आपको वो सुख की अनुभूति एक अच्छा प्ले देख के भी हो सकती है, एक अच्छा आर्ट फॉर्म देख के भी हो सकती है, एक अच्छी एस्थेटिक पेंटिंग देख के भी हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टीचिंग right literature that is didactic in its content, and it has
and appeal. And this can be decided. This is the work of the academicians, this is the work of the teachers, parents included, because the first teacher is the mother. माँ बच्चे की प्रथम गुरु है. So they need to have that feeling, that sense that tomorrow this my child is going to be the future of my society, the future of my nation, and whether I am inculcating the right values in him or her. आज अगर हमारे society में there are so many problems with relation to exploitation of the gender or caste or other things. If somebody knows, look at the Vedas when they say that हम सभी लोग इस वसुधा, इस धरती के संतान हैं, वसुदेवस्य कुटुंबकम, और वही कहीं ना कहीं वेदों पुराणों से ही आता है कि हम जन्म से सब शूद्र हैं. नॉट प्रोपेगेटिंग कास्टिज्म और काइंड ऑफ थिंग, हमें जस्ट ये बात समझने वाली है. जिसमें संस्कार हो वह द्विज है, जिसने वेदों का पाठ किया हो वह विप्र है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वह ब्राह्मण है. So not all the people who are born as Brahmins are Brahmins. जिसमें ब्रह्म का ज्ञान है, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का ज्ञान है, वह ब्राह्मण है. और सबसे बड़ी बात है, जैसे भागवत गीता में भी कहा गया कि एक जो ज्ञानी मनुष्य है, वन हु इज रियली नॉलेजेबल, ये तो वेद से भी आता है, सा विद्या या विमुक्त, ये रियल नॉलेज लिबरेट्स यू, and that liberation is from the bonds of darkness, from the bonds of ignorance, and it can happen only if I know. अब जैसे भगवद गीता की मैं बात कर रहा था, वहां पे आती है समदृष्टि. अब समदृष्टि के लिए मन में वो सामंजस्य भी होना चाहिए कि as Bible also says, do unto your neighbors as you do unto yourself. Help thy neighbor as you help yourself. And they say honesty is the best policy. So if I have that sense, all these scriptures which have been written in different religions, चाहे वो होली कुरान की बात की जाए तो होली कुरान भी सलायत मुस्तकीम की तरफ ले जाता है. स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता, ईश्वर का कोई रास्ता टेढ़ा रास्ता नहीं है. और उस पे चलाने के लिए, to put the people onto that very path, there is need of inculcating right values, right moral code of conduct, and that can happen only if the children, if the progeny is taught these values through literature and art forms. So on the whole, literature and any art form has the power to influence the minds with morals. हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं. Like there is one story about Shivaji that his mother used to tell him the tale of the warriors. So he became a brave warrior. Mahatma Gandhi, he somewhere says that his mother taught him devotion and always speak truth. And he's written that in my experiment with truth also. And in an essay that he's written to the students, he says that end of all knowledge must be building up of character. And character is exhibited by the kind of behavior we show. So, one thing, and this is that knowledge, from where the knowledge comes. Knowledge not only comes from the books, it comes from the surrounding also, it comes from the parents also, it comes from the institutes also, from where we have studied or we are teaching. So, on the whole, this is the crux, that if
right kind of literature. And who has to decide which literature is right or wrong, or which art form is good or bad? First of all, we need to give that sense and a sense to our students or our children what is right or wrong. And then we have to decide what sort of literature or what sort of art form is to be shown to them, so that they witness that and they have that sense, that feeling within them. And the more they are introduced to it, exposed to it, their minds will be full of those values. वो एक अच्छी कहानी, एक अच्छा संवाद, एक अच्छा नाटक, जैसे रामलीला का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे हुआ ऑल ओवर इंडिया। जैसे हरिश्चंद्र जी का इन्फ्लुएंस, महात्मा गांधी जी खुद कहते हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र से ही उन्होंने सत्यवादिता का गुण सीखा। ऐसे हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियां अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, अगर हम पढ़ाते हैं, एंड दोज आर समटाइम दोज आर इन द academia also, those are put into the curriculum of the students also. And in the same manner, some such sort of art forms, such sort of exhibitions, if they are conducted, they are, organized by the schools and colleges, they will definitely help to develop the children, the students. So I go by this text that moral education civilizes and humanizes, and that can happen through literature and arts, because they play a very vital role in that. And if it is effectively taken into consideration and implemented rightly, as I said, that it should be into the curriculum of school. It used to be, but I don't know how does this happen, that we have moved away from it. Maybe some of the universities or the colleges, they still have certain lessons, humanizing lessons, putting moral values on the forefront, because we need not create machines. We need not create only children or students with minds. We need to give them that essence of the moral values also, and that can come through moral education only. And with this prayer, that may you be on the path of Paropara, as it's the motto of the NSS also, not me but you. Let true moral education is inculcated, is taught to the students, to our children. Only then this world will be a better place to live and continue. Otherwise, there are so many energies, negative energies working all over the world for destruction. Om Shanti. Thank you, one and all. Hello. हाँ राजेश थैंक जी। यू पंकज जी। हाँ पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। आपने बहुत सारी मॉरल नीतियों की बातें बताई, लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आया होगा सब कुछ, और हमारे जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब जी आपका जी बोलिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके थ्रू सभी लोगों से जुड़ने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। और ये टॉपिक जो है, दिस इज near to everybody's heart. Yes. And this is the need of the time also, because we are quite moving away from moral values, and we are becoming more and more dehumanized. Correct. तो अभी आप देख लीजिए, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, I would try to answer. Srimani madam, you just check up whether somebody is having some questions to be answered. Srimani madam. Yes, sir. I'm checking, sir.
या इसमें देख लेते हैं, अगर कुछ प्रश्न है किसी को कोई प्रश्न का उत्तर समाधान चाहिए तो वो समाधान दे दिया जाएगा। No, sir, we don't have any much questions here, sir. एक दीक्षा श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन है मेरे पास। जी व्हाट काइंड ऑफ मॉरल एजुकेशन इज गुड? पंकज जी, आप इसका समाधान देंगे? जी, ये दीक्षा जी, जी इनका क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ, दीक्षा जी का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मॉरल एजुकेशन इज गुड? दीक्षा जी, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा दैट moral education cannot have kinds. For example, we cannot say that, okay, a child should have the value of honesty and should not be sincere, or can keep on with, exhibiting anger on others. So one thing that we have to understand, and that is the child is to be taught the difference between right and wrong, because that would take the individual even in the future when he or she grows in age to make out the difference whether whatsoever I am doing is right or wrong, whether it is hurting someone, whether my words hurt someone, whether I should call something directly to someone, is it good to do so or not? And there is no one else who can decide on that very point of time that what sort of decision I need to take, whether it will be taking me towards degradation or upliftment in life. So instead of saying that what sort of or what kind of values we need to teach, we need to inculcate them with a spirit of understanding what is right and wrong. And if we are able to do that, our children, our progeny will never ever be to the side of the Lucifer or to the side of the Shaitan, or will never ever have that आसुरी वृत्ति। जब तक आसुरी वृत्ति मन में नहीं आ पाएगी उसके, क्योंकि आप शुरू से ही अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड बोथ काइंड ऑफ फोर्सेस, whether those are negative or positive. And that person, your child, your students would be productive towards the family, towards the institute, and on the whole towards the nation. Thank you. Yeah, one more question is there. Yeah. ये है ननच्वाई हटलाई, मैं शायद बराबर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ननच्वाई हटलाई जी। इनका क्वेश्चन है, कैन वी इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल मॉरल टेल्स in imparting moral education in today's society? Can we Indeed. incorporate traditional moral tales in imparting moral education in today's society? Yes, definitely. हमने हमेशा ये सुना होगा, we have already heard that grandmothers, they used to tell these sort of tales, the folk tales to the children. I myself have been taught so many tales. I have been narrated so many tales by my mother, by my father also, and my grandfather, maternal grandfather. And this is the right way. Rather, a child loves a story. I have a my child of 6-7 years, and I started this storytelling to him some 2 years ago. I told many folk tales of our area, Dogri tales, that are full of chivalry also,
somewhere in those tales there is the sense of the moral values, what should be done, or kind of. And sometimes I myself concoct, because I do write, so I create some stories of those sort. If you're if you can understand Dogri, I recently composed a Dogri poem for children, like it's related to brothers Chunnu and Munnu. From somewhere they brought uh, a little kitten, and then they were fighting on that. I want to keep it. Chunnu was saying, I want to keep it. Munnu was saying, I want to keep it. And a fight starts in between. Then the grandmother comes and asks them, what are you doing? Why have you brought this kitten? It is too young. As you drink milk of your mother, this also drinks milk of its mother. How would this happen if you take it with you? So listen to me and take that kitten back to the place wheresoever that its mother is. They understand whatsoever is being told by their grandmother. They take the kitten to that very place where the cat was, and come home happily, and also understand that yes, we are also children, and that little kitten also requires mother. Now listen to what I have written. चुन्नू मुन्नू प्यारे गिल्लू ले आए काला बिल्लू चुन्नू आखे ए मैं लेना मुन्नू आखे ए मैं लेना दोनी दी फिर होई लड़ाई लड़ी मरोए भाई भाई then दादी comes दादी आई लाई खड़ाऊं बिल्लू करदा म्याऊं म्याऊं दादी आखे गिल्लो आओ that oh children come to me and listen to me बिल्लू मेरे कोल ले आओ भावें ए है निक्का बिल्लू as it's a small kitten ए भी तुंदे आंगर गिल्लू it's also a little child just like you इन्ने भी आए होना जीना it also has to grow, it also has to feed on its mother. इन्ने भी आए होना जीना बिल्ली मादा दुद्धू पीना जाओ तोले तोले जाओ बिल्लू बिल्ली कोल पे जाओ तो दादी ने जी गल समझाई छोड़ी आए बिल्लू भाई as the grandmother has asked them they put on the kitten to the place where the cat was उनकी भी गल समझा आई मुक्की सारी ऊन लड़ाई they also understand and they stop fighting. Now maybe this was a poem that I have written some 5-6 years back and it's in that tradition of चुन्नू मुन्नू tales. हमारे यहाँ पे काफी कविताएं हैं चुन्नू और मुन्नू को लेकर चुन्नू मुन्नू दो थे भाई दोनों में रसगुल्ले को लेकर हुई लड़ाई कुछ इस तरीके से उसी के रूप में I composed this very poem. But I am saying that whether in the form of short stories, whether in the form of a poem, and there are so many, like we have a tradition of lori singing in our area, lullabies, and it's all over the world that the mothers they sing lullabies for their children, and those lullabies are related to the folk culture, the folk history also. And what are you doing? You are not only inculcating them with right moral values, you are also teaching them the history, the culture, the tradition of that very your area. तो ये गागर में सागर है और as even UNESCO is laying stress on mother tongue. तो आपके एरिया की रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उससे बच्चा कनेक्ट भी कर पाएगा. जितने भी फेबल्स हैं, जितने भी जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, वैसी उसी ट्रेडिशन में हर इलाके की अपनी कथाएं हैं, अपनी फोक टेल्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, एंड दोस कैन टीच सो मच टू द चिल्ड्रन. दे विल डेफिनेटली ग्रो इनटू wonderful individuals. Those will be very productive to the society and to the nation and on the whole to the world. Thank you. पंकज जी और भी 2-4 प्रश्न हैं तो मैं एक और 2 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं. ये है डॉक्टर संतोष कौल कक.
इन्होंने 2-3 प्रश्न दिए हैं। तो जी ये चाहती हैं आज अकादमिक स्तर पर साहित्य शिक्षा की अपेक्षा व्यावसायिक विषयों के बढ़ते वर्चस्व को मूल्यों के बदलाव के लिए कितना जिम्मेदार माना जाना चाहिए। ये एक है। एक और इन्होंने लिखा है, नई पीढ़ी को दोष देने की अपेक्षा क्या मूल्यों को समाज तक पहुंचाने वाले साहित्य का समावेश अकादमिक स्तर पर करना कितना जरूरी है। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दें। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि ये उस स्तर तक गए हैं कि वेयर लाइज द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे बच्चों में नहीं है। इट्स नॉट, अब बच्चा जो है वो एक ऐसे मिट्टी की तरह है, टीचर या पेरेंट वो उस कुम्हार की तरह है, जिस तरीके से वो उस घड़े को बनाना चाहेगा, दैट will happen. No, it depends on us. It depends on the academicians. It depends on those board of studies, whether those are on the school education boards or the university boards or the board of studies at college level. What is being decided by us? What are we up to? हम क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल को स्किलफुल बनाना चाहते हैं, जो एक पैसा कमाने की मशीन हो, पैसा खूब आए। यकीन मानिए, कबीरदास जी ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसके साथ एक छोटी सी एनेक्डोट और जोड़ दूंगा अलेक्जेंडर की। अब सच्ची है या नहीं है, लेकिन एक कथा की तरह इसको ले लीजिए कि जब अलेक्जेंडर मरने लगा तो उसने अपने जो खास अनुयायी थे उनसे कहा कि मेरे हाथ जो है वो ताबूत के बाहर रखना, और जितना ये सोना चांदी है मेरे पीछे जहां मुझे तुम ले जाओगे इस दुनिया से विदा करने के लिए, वहां तक ये गिराते जाना, और दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर वो मेरे जनाजे में होने चाहिए। ऐसा ही हुआ। लेकिन एक जो जनरल था उसने पूछा कि जनाब, आप तो इतने महान सम्राट हैं, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि आखिरकार सिकंदर को भी इस दुनिया से जाना पड़ा, और मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि सिकंदर अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, खाली हाथ थे जब वो इस दुनिया से गया। जो सोना चांदी हीरे जवाहरात उसने अपनी लाइफ में इकट्ठे किए थे, लूटपाट की थी, लोगों को मारा कुचाड़ा था, पूरी दुनिया को जिसने जीता, वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया। और जब उसका आखिरी समय आया, यू नो द हिस्ट्री दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, पर जब उसका आखिरी समय आया, नो डॉक्टर कुड हेल्प हिम आउट। कोई वैद्य, कोई हकीम उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज एकेडमिशियंस, as the teachers, as educators, what are we putting into the curriculum, what are we putting into the, जैसे मैं भी बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेंबर हूँ, अपने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कॉलेज रिलेटेड है, तो वहाँ पे मैं पिछले 10-12 साल से आई एम द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज देयर, and I have always requested them to put such kind of tales, maybe in translation, some folk tales, some kind of literature that is very much related to life changing, teaching the true values of morality, giving the right moral education. So you are right, madam, I forgot your name, that it is unto us to a great extent. Yes, if we are creating a kind of environment, because environment affects us a lot. So if we are creating a right kind of environment, we'll definitely be benefiting on the whole to the society, to the nation, and we would be creating that sarve bhavantu sukhna kind of not individuality but collective consciousness, जो एक सार्वभौमिक तरीके से ये सोचे कि मैं सब हूँ, like Ralph Waldo Emerson has rightly said that we are the minuscule receptacle of the oversoul. हम उस परमात्मा
का जो एक परम तत्व है, हम उसका एक अंश हैं। जैसे मैंने पहले भी इसके स्टार्टिंग में एक आपसे वर्ड शेयर किया था उर्दू का, कि माना आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जरूरत है तो वो नूर दिखाने की, जरूरत है तो वो नूर जगाने की, उस जोत को जगाने की, उस आत्म तत्व तक ले जाने की। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहे जितने मर्जी आज एडवांस डेवलप हो जाएं, लेकिन अगर हम में इन मॉरल वैल्यूज की कमी होगी, हम इंसान को इंसान नहीं मानते, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा स्पिरिट अगर बच्चों में आए तो हम इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक बच्चा पैदा होते ही वैसा नहीं हो जाता। मैंने इसलिए कहा था कि वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है। हम कुम्हार हैं व्हेन वी आर पेरेंट्स, हम कुम्हार हैं when we are teachers, when we are educators, and it is our prime duty, जब हम बोर्ड्स में बैठे हुए हैं, जब हम करिकुलम निर्धारित कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरीके का समाज हम आगे देखना चाहते हैं। कंपटीशन रखिए अपनी जगह, that is necessary, but let that be healthy competition, and that competition, sense of competition should be that I have to better myself. मेरा कंपटीशन केवल मेरे साथ हो, ना कि दुनिया के साथ, तो फिर एक आत्म संतुष्टि भी ज्यादा होगी, एंड द माइंड विल बी एट पीस। वो भागेगा नहीं, मुझे इसको पीछे छोड़ना है, मुझे उससे आगे जाना है। धन्यवाद पंकज जी, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास, लेकिन मैं जी। एक 3-4 प्रश्नों को मिला करके एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। जी ये राजेश जी। है कि क्या हमारा मास मीडिया, सोशल मीडिया और फिल्म जगत, ये सबको मॉरल एजुकेशन को नीचे करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है क्या? और अगर है तो कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, मैं एब्सोल्युटली ऐसा नहीं कहूँगा कि मीडिया या सोशल मीडिया या सिनेमा जगत ये बिल्कुल हर प्रकार से दोषी है, लेकिन एक बात ज़रूर है, वहाँ पे भी हम एजुकेशन की भी बात कर रहे थे, एकेडमिक्स की बात कर रहे थे, वो मीडिया है, सिनेमा एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के लिए जो उनके बड़े बड़े स्लोगन हैं, जो दिखता है वही बिकता है, अगर ऐसा एटीट्यूड आप सोसाइटी में दे रहे हैं, और फिर ये सोसाइटी के ऊपर भी आ जाता है कि क्या आप उस सिनेमा को लाइक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहें आइटम सॉन्ग्स, अगर आइटम सॉन्ग किसी सिनेमा में है तो लोग देख रहे हैं, वो फिल्में सुपर हिट जा रही हैं, उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, तो उसकी व्यूअरशिप है। अगर आप टीवी की बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें, टीआरपी ये किस तरीके से बढ़ रही है, इट मींस भड़कीला, इट मींस टेम्पटिंग, इट मींस इरोटिक। अगर बिक रहा है तो उसमें समाज, लेकिन उसके साथ ही जो वो प्रोड्यूसर है, जो वो डायरेक्टर है, क्या उसमें वो मॉरल इनकनकेशन है, या सिर्फ वो एंटरटेनमेंट मानते हैं, एंटरटेनमेंट से उनको पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन क्या ऐसी भद्दी एंटरटेनमेंट दिखाना जरूरी है? लेकिन अगर समाज उस चीज को नहीं बोल रहा, नहीं कह रहा, देयर इज नो रिएक्शन। ट्विटराटी पे देखिए, देयर इज रिएक्शन ऑन एवरीथिंग। हाउ मेनी पीपल आर रिएक्टिंग, हाउ मेनी पेरेंट्स आर रिएक्टिंग ऑन दैट? हम जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, हम जैसे बुद्धिजीवी समझते हैं, क्या वो लोग ऐसी बातों के लिए आगे आ रहे हैं? आप कार्टून का कंटेंट देखिए, देयर इज सो मच ऑफ अटर वायलेंस इन दैट। एवरी कार्टून इज फुल ऑफ वायलेंस। Who is allowing that? Have we not become mere consumers? We have become mere consumers. We have become mere commodities in this, startup of consumerism. Everything is good. वो एक ग्लोबलाइजेशन का, लोकलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का दौर ऐसा है कि मेरे वाला सबसे अच्छा है, और दिखावा, कहीं ना कहीं ये दिखावा फिर हमारे मीडिया में भी आ रहा है। मैं आर्ट फिल्मों की अगर आप बात करें, पहले लोगों को शायद इतना तरजीह नहीं देते थे आर्ट फिल्मों को, लेकिन लोग आज पसंद करते हैं। मैं आपको अगर अपनी बात कहूं तो मैं इरफान को बहुत बढ़िया एक्टर मानता हूं, बिकॉज
वो एक संदेश दे रहा है सोसाइटी को। और बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम के एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया सिनेमा दिया हुआ है। एक आर्ट और कमर्शियल का मिक्सअप मैशअप सा भी है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैं अपनी एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। हमने घर में दूरदर्शन लगाया बड़े सालों बाद, because we were so much driven by Z networks and colors and all that. वहां पे एक दो सीरियल बहुत अच्छे लगे। हमारे बेटे को उसमें शक्तिमान बहुत पसंद आया, तो कहने लगा पापा शक्तिमान के पास शक्तियां कहाँ से आई। मैंने कहा बेटा उसके लिए वो योग करते हैं, कुंडलिनियों का जागरण करते हैं। तो कहता पापा मैं भी कुंडलिनियां जगाना चाहता हूँ। अब एक 6-7 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मैं कुंडलिनियां जगाना चाहता हूँ, मुझे उसको योग बताना पड़ा। और वह योग जिसको, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हैं, ईसाई राष्ट्र हैं या मुस्लिम राष्ट्र हैं, कुल ऐसे 190 countries have endorsed and sponsored yoga, and by International Yoga Day we recently celebrated. तो वैल्यूज की जहां तक बात आती है, वो फिर मैं यही कहूँगा, चाहे वो कोई भी मीडियम है, बिकॉज सिनेमा इज ऑल्सो वन मीडियम, टीवी इज ऑल्सो वन मीडियम, सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन मीडियम, और वहां पे अच्छा और बुरा दोनों तरीके का कंटेंट है। फिर बात वहां पे आके रुक जाएगी, what are we teaching to the students, what are we teaching, and teaching means not forcing onto them, allowing them to experience what is right and wrong. क्योंकि कुछ मॉरल माना हो सकता है कहीं पे समाज में, सोसाइटी में ये सब्जेक्टिव भी हो, बट ऑब्जेक्टिव भी बहुत है। लाइक ऑनेस्टी, इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे मॉरल्स जब होंगे, ऐसे मॉरल एजुकेशन, ऐसी मॉरल वैल्यूज जब होंगी, तो डेफिनेटली मुझे पता है मैं ऐसा सिनेमा नहीं देखता, मैं ऐसा सिनेमा पसंद नहीं करता, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी वाइफ है वो नहीं करती, और बच्ची को मैं जब ये देख रहा हूँ। दूसरा, ही इज आफ्टर उपनिषद गंगा, ये एक सीरियल है जो 10 बजे के करीब दूरदर्शन पे आता है, उपनिषद गंगा। इट्स आर रिलेटेड टू उपनिषद आज, और उपनिषद वही था, गुरु के पास बैठ के कुछ सीखो। तो घर में वह गुरु जो है वो माता पिता हैं, बाहर इंस्टीट्यूट्स में वह गुरु जो है वो टीचर्स हैं। लेकिन वैसा ज्ञान क्या हम दे पा रहे हैं, उसके लिए वो सबसे पहले हमारे खुद के पास होना चाहिए। अगर ऐसा पेरेंट्स के पास होगा, बच्चों में भी वो चीज जाएगी। सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन अस व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी वी वांट टू क्रिएट। थैंक यू सर जी। एक और आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वैसे बहुत है अभी प्रश्न पूछने के लिए, अगर समय रहा तो हम लोग ऐसा वार्तालाप जारी रखेंगे, लेकिन एक प्रश्न ये अभी आ रहा है। मैं एक बात कह दूं, मैं उपलब्ध हूं, ये आपके ऊपर है, आप जब कहेंगे रुकने के लिए रुक जाऊंगा। मैंने इसलिए खुद भी थोड़ा विषय को अपना शॉर्टन किया था, क्योंकि प्रश्नोत्तर से बहुत कुछ निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि नो नॉलेज इज एब्सोल्यूट, और अब जब हम ये प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो ये एक वाकई में महायज्ञ हो रहा है। तो इस महायज्ञ में हम सभी अपनी आहुतियां डालें। जी जी। एक प्रश्न है कि आज के वर्तमान समय में, सर, डू यू थिंक inculcating moral science in schools and colleges as a part of syllabus is the need of the hour? राजेश जी, मुझे लगता है कि इसकी चर्चा हमने पिछले भी जो हमारे प्रश्नोत्तर रहे उसमें की है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि देखिए, बहुत ज्यादा एडवांस सिलेबस, बड़ा इंटरनेशनलाइज्ड स्कूल्स, हम कहते हैं इंटरनेशनल स्कूल हो गया, एक इंटरनेशनल लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ शेल्डन पॉलक की। ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोफेसर्स on Indology at Harvard University at this time. And what does he write about Ramayana? That Ramayana is the tale taken from Jatak tales of Buddhism. How many of us agree? Do we agree that yes, it is so? We would start believing it in the age of post-truth. We would start believing it if it comes in social media, if all the books of those sort are written, and we do not read what is original. कि भाई ओरिजिनल देखें तो सही, रामायण लिखा किसने है? वाल्मीकि का नाम आता है भाई किसी का,
गोस्वामी तुलसीदास का नाम आता है रामचरितमानस का, चलिए उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो क्या वैसा एटीट्यूड है या नहीं? और जब बात चली है रामायण की, रामायण इज ऑल अबाउट मर्यादा, एंड इट्स नॉट अबाउट मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इट इज आल्सो अबाउट मर्यादा दैट माता सीता exhibits. This is also about the maryada that Hanuman exhibits. This is also about maryada even that Ravana exhibits. Ravana is not a blind debauch. He is not lecherous. He is waiting that as and when Sita agrees to be his wife, only then he would take her into his palace in Lanka. So that's the thing. How many of us, in whether in the schools or in the colleges, how many of us know about our culture, our scriptures? हाथी मताई की कहानी कितने लोगों को पता है? शहरजादे और 1000 कहानियां, अरेबियन नाइट्स की कहानियां किसको पता है? सिंदबाद जहाजी का हमने कभी कभी सीरियल देखा था। हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट दैट? सो दैट्स हमें हमारी सूफी परंपरा के बारे में कहां से ज्ञान मिलता है? क्या हमें बुल्ले शाह की काफियां पता है? हैव दोज बीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन? वो एक भाषा से दूसरी भाषा में बताई जा रही हैं। बुल्ले शाह कहते हैं मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जे किज ढैंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया! डोंट ब्रेक हार्ट ऑफ एनीवन। इससे ज्यादा मॉरल एजुकेशन कहां मिलेगी हमें? जहां पे बुल्ले शाह ये कह रहे हैं कि मंदिर रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, मंदिर है नहीं है तो और बन जाएगा, मस्जिद है या नहीं। अब हमें दुबई की यूएई की बात पता चला, वहां पे जहां पे उनको जरूरत होती है जगह की, वो वहां से मस्जिद हटा के कहीं और कर देते हैं। हमारे गांव में ऐसा हुआ, मंदिर रोड के बीच में आ रहा था, तो सब गांव वालों ने ये सलाह की कि भाई प्रभु की मूर्ति तो हम थोड़ी सी और भी कहीं थोड़ा सा साथ में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, फिर से उसका वो जो एक जीवदान का क्रिया है वो तो हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस जाना है इन्होंने आगे, उसके लिए रोड चाहिए है। उससे कोई मर्यादा भंग नहीं, उन्होंने क्षमा याचना करके वहां से मंदिर से वो मूर्तियां बड़े एक रीति रिवाज के अनुसार वहां से उठाई, मंदिर का निर्माण हो चुका था, वहां पे पुनः स्थापित कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जेगे चंदा, बिकॉज दीज आर मेयर स्ट्रक्चर्स। एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। बट डोंट ब्रेक हार्ट ऑफ एनीवन। हम किसी के साथ एक खोखला प्रॉमिस ना करें कि मैं राजेश जी आपसे कहता ठीक है, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, इस दिन हम ये करने जा रहे हैं, फिर मैं 2 दिन पहले कहता मैं क्षमा प्रार्थी हूँ राजेश जी, व्यस्तता इतनी हो गई कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तो वही बुल्ले शाह वाली बात आ जाती कि एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। सो द गॉड इज नॉट आउटसाइड। कबीर सेड, मोको काहे ढूंढे प्राणी, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना धरती आकाश में, आई एम नोवेयर एल्स। यू हैव टू। अब इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, राजेश जी तो अच्छे से जानते होंगे, बहुत ज्ञानी हैं, योगी हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं तो उसको अंतर ध्यान कहते हैं। और हम ये देखिए कि जितने भी सिद्ध लोग हुए, चाहे वो पीर फकीर हुए, चाहे वो हमारे सिद्ध महात्मा थे, they were the real yogis। और उनको जब वो ऐसे हो गए तो उनको कोई चिंता नहीं रही कि मुझे बहुत कुछ लेना है। इवन के साइंटिस्ट की बात करें, अगर एपीजे अब्दुल कलाम को यही देखना होता कि मेरे पास, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए हैं, मुझे बहुत सारे जूते चाहिए हैं, मेरा हेयर स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए बिकॉज मैं इतना रिनाउंड हूँ, आई एम सो फेमस, तो शायद वो कभी एपीजे अब्दुल कलाम बन ही नहीं पाते। The greatest of all the people in the world are the simplest individuals। और यह बातें अगर हमारे करिकुलम में इनकलकेट नहीं की जा रही हैं तो हम किस मैड रेस की तरफ अपनी जनरेशंस को लिए जा रहे हैं। दिस वी हैव टू थिंक टुडे। ये हम किस तरीके का कंपटीशन इन बिटवीन द इंस्टीट्यूट्स, इन बिटवीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवा रहे हैं, दिस वी हैव टू थिंक टुडे। आफ्टर आप चाहते क्या हैं?
सक्सेस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिजायर कभी खत्म नहीं होने वाला। मेरे पास साइकिल है, आई डिजायर फॉर अ स्कूटर, देन आई डिजायर फॉर अ कार, देन a house maybe of 2 rooms, then a big house, और फिर हो सकता है हवेली। हमारे उधमपुर वाले जम्मू जाएंगे, जम्मू वाले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली वाले लंदन या अमेरिका या न्यूयॉर्क। एक डिजायर बढ़ता जा रहा है, और जितना आप डेंस सोसाइटी, अर्बनाइज सोसाइटी में जाते हैं, उतना ज्यादा आपका फ्लक्स ऑफ मनी, यू नीड मोर, यू वांट टू अर्न मोर। वेयर डज इट एंड? मुझे अलेक्जेंडर पोप का ऑन सॉलिट्यूड याद आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि व्हाट डज अ हैप्पी मैन रिक्वायर्स? An acre of land is enough, to his side good books to read, and when he dies, not a tombstone is raised. I'm not taking quoting the entire verse, I'm just giving the gist of that. This much is needed. सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, लेकिन if we have that moral sense that we need to give to the society also, to the nation also, देश हमें बहुत कुछ दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं? ये सेंस कब आएगी? मुझे अपने राइट्स का पता हो और ड्यूटीज का ना हो। सो व्हाट डू आई नो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? इफ आई हैव राइट्स, आई डू हैव ड्यूटीज टुवर्ड्स माय नेशन, टुवर्ड्स माय सोसाइटी आल्सो। द इंस्टीट्यूट दैट आई एम देयर, वेयर आई एम वर्किंग, और वेयर आई एम टीचिंग, और वेयर आई एम लर्निंग, हम ऋणी हैं। सो इसलिए चाहे we live in the ultra modern age, in an ultra computerized age, digitalized age, we are moving towards artificial intelligence, but we should not create automatons. हमें cyborgs नहीं बनाने हैं। There needs to be a humanization mission. इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होनी चाहिए, और ये right inculcation of moral humanistic values के थ्रू ही हो सकता है। जी धन्यवाद पंकज जी। आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए, और अंत में आपने इंसानियत की बात कही। इंसानियत की बात पे 1-2 पंक्तियां कहते हुए मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। सभी लोग सुन रहे हैं, इंसानियत की बात हुई है तो मुझे कुछ याद आ गया अपने दिमाग में। तो ये 2 पंक्तियां इस तरह से जाती है, मैं इंसान से ज्यादा इंसानियत को महत्व देता हूं, क्योंकि इंसान तो सभी होते हैं, इंसानियत सभी में नहीं होती है। क्या बात, बहुत अच्छे। इन वाक्यों के साथ मैं इस वेबिनार को समाप्त की घोषणा करता हूं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत समय दिया अपना, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम इस तरह की कुछ मुलाकातें, कुछ व्याख्यान करते रहेंगे, और इस तरह से हम जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Now I request Sri Naveen sir, the IQAC coordinator, to kindly propose the vote of thanks. Good evening to one and all. It is my great privilege to express vote of thanks. To this extent, I wholeheartedly thank to Dr. Pankaj Sharma sir for sparing his valuable time and address the gathering. I thank webinar convener Dr. Rajesh Agarwal sir, webinar convener, for arranging such a wonderful session in the present situations. Dr. Pankaj Sharma sir would help the session deeper understanding and implementations for the moral education to the students community, implement them in our daily life or in the academics excellence of the students. I thank all the participants for sparing their valuable time, reliable and joining us in the evening today. I also thank Srimani Madam, coordinator of today's seminar, and technical team Hayat Basha and Mr. Nazir for the supporting continuous guidance and organizing the webinar. Thank you.
for the joining the webinar. Thank you. Regarding participants, we will send a feedback link in the chat box. It will be activated another half an hour. Please fill the feedback form. We'll provide the certificate for the all the participants. Thank you.